चले Hello students, welcome to the live session of today. This session is for the class 12 and class 12 and the name of the topic is inverse trigonometry chapter number 2. और आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट आर द एमसीक्यूज क्वेश्चंस. लास्ट जो वीकेंड के ऊपर हमने लास्ट संडे जो डिस्कशन करी थी एमसीक्यूज की दैट इज ऑफ द टॉपिक मैट्रिसेस और हमने जो क्वेश्चंस उठाए थे दैट फ्रॉम द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से. आज फिर से सोर्स हमारा सेम रहेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर 2 एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के. सो लेट्स स्टार्ट द फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन and the first question is on your screen. Here we need to find the principal value of cos inverse x. तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक पेज शेयर करने जा रहा हूँ लाइक दिस. आप देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि cos इनवर्स x के सामने देखिए डोमेन एंड रेंज और रेंज जो इसकी बता रखी है 0 से पाई. सो क्लोज इंटरवल 0 से पाई. और अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें, प्लीज शो द ऑप्शंस को देखें तो थर्ड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा. सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज योर सेम. हमें बताना है ऑफ फंक्शन हमारा है कोसिकेंट इनवर्स एक्स. तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स के लिए भी सेम पेज यहाँ पे अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर देखिए. यहाँ पे कोसिकेंट इनवर्स एक्स के सामने जो है इसकी रेंज कॉलम में देखिए जाकर वहां पे -π/2 टू π/2 एक्सक्लूडिंग 0. और अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. प्लीज शो द ऑप्शन डी. यस, दिस look at the fourth and the last option. D is the right answer for this one. Now see the question number 3 and the statement for the question number 3 is, it is a question number 3 but according to the book it is 22nd question. 22nd question which is 3 tangent inverse x plus cot inverse x is equals to pi. आइडेंटिटीज के पेज को प्लीज शो कीजिए. जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटीज है उसका इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री इस्तेमाल हो रही है आइडेंटिटी दैट इज टेंजेंट इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2. तो यहां पर इसको सेपरेट करते हैं लाइक दिस and the value of this is π/2. take to the other side. पाई में से π/2 को माइनस करेंगे तो π/2 आएगा और ये टेंजेंट इनवर्स x π/2 ये 2 डिनोमिनेटर में जाके 4 एंड टेंजेंट इनवर्स x π/4 कहां पे होता है when the value of x is 1. so see the options. yes, option B is the answer. The value of x is 1. Now our 22nd, the fourth and 23rd question is we need to find the value of sine inverse of cos of 33 π/5. Right? For the answer, this is sin inverse of cos. इसको स्प्लिट करेंगे लाइक 6 पाई में से 5 6 30 प्लस 3 पाई विल मेक 33 π/5. यहां से ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का इस्तेमाल करते हैं. दिस इज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट 6 पाई से नेक्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहा है तो ये कॉस का कॉस रहेगा पॉजिटिव में रहेगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं. अब इसको चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस. इसको और थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं बाय π/2 प्लस
पाई/10, इसको दोबारा एलसीएम करेंगे आपको यही चीज मिल जाएगी। और 90 पर जब इसको चेंज करेंगे, दिस इज साइन इनवर्स, कॉस विल कम टू द साइन माइनस ऑफ साइन। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और पाई प्लस मीन टू सेकंड क्वाड्रेंट माइनस, ये कॉस साइन में चेंज हो जाएगा एंड दिस माइनस विल आउट, minus pi/10 be the value for this inverse function. Next is the 24th question, or over here we need to discuss the domain of the given function and see the given function on your screen. The given function is on your screen. Okay, so the function is cos inverse 2x minus 1 is a cos inverse 2x minus 1 is the function. इसके लिए डोमेन हमें चेक करना है। सो सी द डोमेन पेज, जो फॉर्मूला जो पेज आपके सामने, काइंडली चेंज द पेज। यहाँ पे आप cos इनवर्स की डोमेन देखिए, द डोमेन फॉर द cos इनवर्स इज -1 to 1। सो -1 to 1 ये क्या बन जाएगी आपकी, दिस इज cos, so this value 2x minus 1 lies between -1 and 1। तो इस तरह से इन बिटवीन -1 and 1 इसको चेंज करते हैं बाय एडिंग 1, सो दैट हम इसे x को अकेला करें। दिस इज 0, 2 डिवाइडेड बाय 2 होल इक्वेशन, so 1, so x belongs to 0 1 and this is the option. Clearly we can say, see the option A, 0 to 1, so option A is the right answer for this. The next is your sine inverse, 25th question. 25th question, please on the screen. The function sine inverse -1, और अगर इसका डोमेन पेज देखें, see the domain of this sine inverse x is again -1 and 1, -1 like this one, or because this is square root and square root minimally start from the 0, because we don't have any value of x which make this a negative term. So 0 से pi, now square it, so add 1, this is 1 x and x belongs to 1, close interval 1 to 2, and it is option number 1, again A. Again option A is the right answer for the 25th question. For the 26th क्वेश्चन के लिए अब देखिए, ये स्टेटमेंट आपके सामने है, इसमें हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, एंड दैट द पेज ऑफ द आइडेंटिटी
For what value of x this cos this value is equal to 0? तो हमें बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से सबसे पहले आइडेंटिटी का इस्तेमाल करें, उससे पहले टेक दिस cos टू 0, cos इनवर्स 0 विच इज एट 90. अब देखते हैं विच आइडेंटिटी हेल्प अस. तो यहां पर लिखने जा रहा हूं, दिस इज साइन इनवर्स x cos इनवर्स x पाई बाय 2. यहां से द वैल्यू ऑफ the cos sin inverse x can be इसमें ही, तो इसको उस तरफ लेके जाएंगे. like this, in place of pi by 2 minus cos inverse x we use sin inverse. This the value of x is equals to 2 by 5 and it is in the option B is answer. Option B for its answer. Now question number 27, see what is it? Sine 2 tangent इनवर्स 0.75. तो यहां भी आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, तो जो आइडेंटिटी यहां पर हमें हेल्प करेगी, द आइडेंटिटी अभी आएगी आपके सामने. वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले 75 को चेंज कर लेते हैं. सी 0.75 कैन बी चेंज 75 by 100 and this is 25 3 the and 25 4 the. This 0.75 can be written like this: sine 2 tangent inverse 3 by 4. Now see the page of identities. तो यहाँ पे आप आइडेंटिटीज पेज देखें जहाँ पे 2 टेंजेंट इनवर्स x की आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है. एंड what it is, 2 tangent inverse x can be changed in sine. This is 2 of x upon 1 plus x square. Sine inverse 2 of x यहाँ पे हमारे पास 3 by 4 ही है अपॉन 1 plus x square 3 by 4 square. तो यहाँ पे आप साइड पे लिख लें जो हमने इस्तेमाल किया. 2 tangent inverse x in term of sine inverse x is 2x upon 1 plus x square, इसका इस्तेमाल हुआ. अब यहां से ये दोनों हटे, what we left, this is, इसे कैलकुलेट करना, this is 3 by 2 and upon 1 plus 9 by 16, this is 3 by 2, this is 25 by 16, by reciprocal the terms, it is 16 25 2 8 24 by 25 and 24 by 25 अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, you will have after division it is something about 0.96 and it is in the option C. Yes, option C is the answer for this one.
28th one, the value of cos inverse cos 3 pi by 2. According to the book, it is cos inverse of cos 3 pi by 2. So look at 3 pi by 2, the option 3 pi by 2 is there, but it is not in its, like, if we talk its range. ओके, सो हमें 0 और पाई के बीच में आना पड़ेगा. 0 और पाई के बीच में आने के लिए हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, दिस वन, राइट. बिकॉज जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो रेंज या इसकी प्रिंसिपल वैल्यू दैट इज फ्रॉम 0 टू पाई, और ये जो 3 पाई बाय 2 जो है पाई से आगे चल रही है, तो इसको पहले, ताकि हम इसको कैंसिल कर सकें, सो कॉस ये क्या आएगा हमारे पास, इसको पाई प्लस पाई बाय 2 इस तरह से. इन द सेकेंड क्वाड्रेंट पाई remains in the pi, but is it in the third quadrant? ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई प्लस. इन द थर्ड क्वाड्रेंट cos पाई की वजह से cos ही रहेगा, बट विद दिस माइनस cos पाई बाय 2 90, cos 90 वैल्यू क्या रहती है 0 and cos 0 is 1. Where is, okay, cos 90 is 0 and cos in, so here the next 29th, two secant inverse 2 plus sin inverse 1 by 2 2 secant inverse 2, क्वेश्चंस लेके आओ सामने इसके. This is 2 secant inverse 2 plus sin inverse 1 by 2. We need to find the value of this one. Okay. So for the answer of it, we need to see the secant inverse, secant 2 कहाँ पे होता है. अगर हम 10th के टेबल को देखें, according to the 10th table, the cos 1 by 2 is on 60, right. तो यहां पर हम लिख सकते हैं that is 2, इस 2 की जगह पे in term of secant it is secant 60 like this. और इस तरफ देखें sin inverse sin 1 by 2 in term of sin कहां पे लिखेंगे हम, it is in 30. So this is sin pi by 6. So यहां से what we left, and this is 2 pi by 3, five pi by 6 is 5 pi by, it's option B. The next one is, we need to find out question number 30. The tangent inverse x plus tangent inverse y is equals to 4 pi by 5.
हमें कॉट इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स वाई की वैल्यू निकाल के दिखानी है इन चारों ऑप्शंस में से विच ऑप्शन इज राइट फॉर कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई। तो इसके लिए यहां पे आइडेंटिटी देखते हैं, लाइक टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो इसका इस्तेमाल करेंगे पूरी तरह से, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये वाली आइडेंटिटी का। तो यहां से कॉट, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ओके। और जब हम टेंजेंट इनवर्स वाई की बात करेंगे तो हम उसको 1 बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स वाई इस तरह से लिख लेंगे। तो चेंज दिस वन, टेंजेंट इनवर्स एक्स की जगह पर ये लिखते हैं, दिस इज पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस पाई बाय 2 माइनस cot inverse y. On the other right side it is 4 pi by 5, this is minus cot inverse x minus cot inverse, this is 4 pi by 5, this is pi by 2, it is pi, like this, taking minus common, so pi by 5 could be the answer. Yes, option है 5, option A. Option A is the answer for this one. For the next one, the 30th, and the statement for the 30th question is sin inverse 2a plus cos inverse 1 minus a square tangent inverse 2x 1 minus x square, where x belongs to this one. Further, find the value of x for this one, and according to this one यहां भी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। लुक एट, साइन इनवर्स को हैंडल करने के लिए हमें आइडेंटिटी कुछ इस ढंग से इस्तेमाल करनी होगी कि यहां पर अंदर भी साइन की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो अगर आप यहां पे a की वैल्यू को टेंजेंट रख लेते हैं, लुक एट, अगर हम यहां पे a ऑलरेडी यूज हो चुका है, यहां पे x है, यहां पे थीटा ले लेते हैं। चलिए a को टेंजेंट थीटा का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर क्या बनेगा, साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस दिस वन, दिस इज 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एंड 1 प्लस, राइट। यहां से देखिए आपके सामने पेज है, where you can see the identities or the formations। यहां पे देखिए 2 tangent 1 plus tangent square can be written in the form of sin of 2 theta। सो ये आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्लास 11 की है, इट इज ऑफ क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री से ली गई है, और ये आपका डबल एंगल फॉर्म बन जाएगा आपका cos 2 थीटा का। राइट, तो इट इज 2 of theta plus 2 of, again it is balanced,
यहां से 4 this theta the value in term of tangent in इनवर्स ए, बिकॉज हमें ए एंड एक्स की फॉर्म में आंसर करने हैं, तो यहां पे आ गया 4 टेंजेंट इनवर्स ए एंड टेंजेंट इनवर्स दिस इज 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ सी द ट्रांसफॉर्मेशन. अब यहां से इसको इस तरह से लिखते हैं, दिस इज 2 tangent inverse A is equals to tangent inverse 2x 1 minus x square, right? So see the transform inverse trigonometry page. वहां पे देखिए 2 tangent inverse को हम किस तरह से उसकी जो फॉर्मेशन है वो क्या रहेगी. ओके इट्स ओके नहीं है तो it is again tangent inverse, ये जो आपके सामने लिखी हुई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. इसी की तरह से ओके ये इसी की फॉर्म में बनता है, बट दिस इज इन द एक्स, दिस इज बिकॉज हमारे पास यहाँ पे एक ए में था तो ये ए में तैयार होगा. फर्दर आप ध्यान से देखिए फिर से ये ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है, दिस इज 2 ऑफ टेंजेंट इनवर्स, इसमें बना फिर से 2 टेंजेंट इनवर्स तैयार है हमारे पास, इसको फिर से बना देंगे टेंजेंट इनवर्स बट 2, ये पूरे का पूरा लाइक फंक्शन के फॉर्म में बन जाएगा अपॉन 1 माइनस 2a लाइक दिस. अब दोनों कंपेयर करें, अगर कह रहा है ये दोनों इनवर्स फंक्शंस आर इक्वल, अगर इनवर्स फंक्शंस इक्वल है तो इट मींस वैल्यूज आर इक्वल. हमें मोर ओवर करना क्या था, यहाँ पे x की वैल्यू ढूंढनी थी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. अगर आप ध्यान से कंपेयर करें, टेंजेंट की जगह पे टेंजेंट है, ओके ये 2 की जगह पे 2 है, 1 की जगह पे 1 है, यहाँ x की जगह पे कौन है, ये पूरा. सो द वैल्यू ऑफ x क्या बन जाएगी, 2a 1 माइनस a स्क्वायर. This can be, we can say relationship of x and a, or we can say the value of x in term of a. The option is over here. Yes, option D is the answer in the 31st question. So 32nd question, and the statement for it, cos inverse 7 by 25. For that, इसे देखिए, will change. This is what is the cos. This according to that, cos is base upon hypotenuse. If hypotenuse, then what it will be, what perpendicular will be, 625 minus 49, it is 576 is 24. So this is 24. So accordingly the value of cot will be like, हम इस cos inverse को cot में change करेंगे. Cos inverse x 7 by 25 can be changed with the value cot inverse, which is base upon perpendicular, and the base over here is 7 and perpendicular is 24. So इसकी जगह पे हम क्या लेके चलेंगे, this is 7 by 24, and the answer of the function is, it comes out, it is 7 by 24. Option D is the answer.
Next, 33rd question, in which uh, the function is tangent of 1 by 2 cos inverse 2 by square root 5. Tangent of 1 by 2 cos inverse 2 by square root 5. So this is, yes, हमें इसका आंसर निकालना है. लाइक चेंज करेंगे इसको भी as much as possible. Say is equals to x and 1 by 2 cos inverse, हमने इसकी वैल्यू को x मान लिया. इसका मतलब ये है कि हमें x की वैल्यू चाहिए. x की वैल्यू को फोकस करते हैं, बट टिक टू द अदर एंड, दिस बिकम द टेंजेंट इनवर्स x, not 2 to the other side. It is cos inverse 2 by square root 5 is equals to 2 tangent inverse x and 2 tangent inverse with the help of the tangent property which is 2 of x. अभी पिछला क्वेश्चन हमने देखा था 2 tangent inverse can be converted like this. So cos inverse को भी हम टेंजेंट में ले चलते हैं. कैसे? अभी जो बनाया था हमने, लाइक इट इज cos inverse, it is base upon hypotenuse, it is base and hypotenuse. तो इसका 5 minus 4 1, it is 1. perpendicular in term of tangent inverse जाना है, perpendicular upon p by b, it is 1 by 2. now 2x 1 minus x square is 1 by 2. now cross multiply, this is 4x 1 minus x square and x square plus 4x minus 1 is equals to 0. यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं. x इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर 16 माइनस 4ac 4 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1. x इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस माइनस, दिस इज 16 माइनस माइनस प्लस 4 2 minus 4 plus minus, it is 20 and 20 is your 2 square root 5 upon 2. the value of x finally by taking 2 out, it is minus of 2 plus minus square root 5. 2 बाहर आकर नीचे से बैलेंस हुआ. so these are the two values of x. यहाँ पे अपने आंसर्स देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं कहाँ है. ऑप्शंस के अकॉर्डिंग we have one option, तो यहां से देखिए x इज इक्वल टू माइनस 2. एक हमारे पास ऑप्शन ये रहेगा, एक रहेगा पर माइनस 2 माइनस, फिर टोटल नेगेटिव वैल्यू हम रिजेक्ट करते हैं. यहाँ पे हमारे पास द वैल्यू ऑफ x क्या बनेगी, x square root 5 minus 2 be the answer, and it is option B. Option B is the answer for this problem.
2 tan inverse x plus sin inverse 2x upon 1 plus x square. We need to find the value of this one. Like इसके लिए भी क्या करेंगे, इसको हम बना सकते हैं बाय टेकिंग x इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा. दिस इज 2 टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा sin inverse. This is 2 tangent upon 1 plus tangent square theta, and this is 2, this is sin inverse sin of 2 theta. This is 2 theta plus 2 theta and 4 theta. This is 4 tangent inverse x. See the options. अगर कुछ ऐसा है तो options में this is 4 tangent inverse. Yes, option A is the right answer for this one. 35th one, and the statement of 35th one is cos inverse alpha plus cos inverse beta plus cos inverse gamma. Three pi. Then what will be the value of alpha, beta plus gamma, beta alpha? तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बना हुआ है, उस सीक्वेंस की हमें वैल्यू निकाल के दिखानी है. दैट इज वी नीड टू वैल्यू अल्फा बीटा प्लस गैमा, देन बीटा गैमा प्लस अल्फा, देन गैमा बीटा प्लस अल्फा. तो व्हाट इट विल बी. तो इसको देखते हैं. सो दिस इज 3 पाई ऑफ cos इनवर्स x. इट इज cos इनवर्स अल्फा की अगर हम बात करें, सो इट विल बी, प्लीज डोमेन रेंज का पेज निकालना जरा. वहां पे cos इनवर्स को लेके आओ सामने. यस, cos इनवर्स x. लुक एट द cos इनवर्स x जो है इज look at the range is 0 to pi. So cos inverse alpha it is 0 and pi. तो सभी की 0 and pi होगी like this one. cos inverse beta भी इसका cos inverse alpha beta gamma भी like this. इनको ऐड करेंगे. this is 0. ओके, फ्रॉम हियर किसी एक को भी उठा ले तो ये बन जाएगा cos इनवर्स से अल्फा दिस वैल्यू, क्योंकि 0 पाई के बीच में, सो विल टेक पाई एंड अल्फा cos पाई -1. तो इसी अकॉर्डिंगली हमारे पास बीटा भी और गैमा भी तीनों -1 आ जाएंगे. इसका एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है. ऑप्शंस 0, 1, 6 एंड 12. लेट्स सी विच ऑप्शन विल वर्क. तो ये अल्फा बीटा गामा की -1 है, इनको यहीं पे फिल करेंगे. फिर देखते हैं ऑप्शन क्या बनता है हमारे पास. दिस इज -1 -1 सभी की वैल्यू सेम ही है तो -1 like this. This is -1 -2 -1 -2 -1 -2. This is +2 +2 +2. This is 2 2 4 2 6. So option 6 is there. Yes, option C be the answer. But यहाँ पर हमने ये वैल्यू ली, हम 0 भी ले सकते हैं. ओके, आप ट्राई कीजिए, आप 0 लेते चलिए, यहाँ पे +1 आ जाएगा. +1 के लिए यहाँ पर जो आंसर आएगा सी, क्या वो ऑप्शन में है? अगर वो भी ऑप्शन, मेरे हिसाब से वो ऑप्शन में नहीं होगा, बट आंसर बन सकता है वो भी. ठीक है, तो इसलिए हमने पाई चूज किया सो दैट हमारा आंसर रिफ्लेक्ट करे चारों में से. राइट. So this is the last question, 36th
and the statement for it. दिस इज cos 2x, दिस इज x, हमें इसका आंसर ढूंढना है. दिस इज cos 2x, इसको सिंगल टर्म में लेके चलते हैं. 11th की ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वहां से वहां की मदद से हम ये डबल एंगल रिलेशनशिप को सिंगल एंगल में लेके जाएंगे, सो दैट हम x के बारे में कुछ बता सके कि x की वैल्यू दी ऑप्शंस में 4 वैल्यूज में से कौन सी हो सकती है. तो यहां से लाइक cos 2x का सिंगल cos x में क्या आंसर बनेगा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. cos 2x को इसमें हम चेंज कर सकते हैं. So finally ये हमारे पास cos x is equals to x. This is not possible for no any value. जैसे फॉर एग्जांपल अगर x को आप, उसने कहा कि x की ऑप्शंस कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे 0 1 2 एंड इनफाइनाइट, तो कोई भी ले लो. अगर मैं cos 0 भी रखता हूँ तो ये 0 और cos 0, और अगर मैं cos 1 को 1, पर cos 1 इज नॉट इक्वल टू 1. लाइक इस तरह से ये जो रिलेशनशिप है ये पॉसिबल रिलेशनशिप नहीं आया. सो x के लिए विच वैल्यू, तो लाइक विच इज नॉट ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे x की बहुत सारे रिलेशनशिप में cos, हमारे पास लाइक x की नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी बनेंगी. जैसे ऑप्शन ए में कहा है कि कोई वैल्यू नहीं बनेगी, मींस x हैज नो आंसर 0. दूसरे में बताया कि x हैज 1, x की एक वैल्यू बनेगी. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जहां पर हम ये कहेंगे सो ये रिलेशनशिप हमें कुछ नहीं देगा, कोई भी x की वैल्यू नहीं देगा. सो x इक्वल्स टू 0 इन द ऑप्शन ए. Okay, so this is all about the MCQs of class 12 chapter 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. आज हमने डिस्कस की MCQs के लिए, और दिस इज ऑल अबाउट
फॉर दिस सेशन, बट नेक्स्ट सेशन हम जो कवर करेंगे उसको हम 2-3 दिन पहले ही आपके सामने आपको एक नोटिफिकेशन के तौर पे बताएंगे कि नेक्स्ट एमसीक्यूज हम किस चैप्टर के डिस्कस करने जा रहे हैं। धीरे धीरे, जैसे मैंने लास्ट वीक ये कहा था कि बहुत सारे एमसीक्यूज के रेफरेंसेस हमें देखने पड़ते हैं। जैसे एनसीईआरटी एक है, हमने सोर्स रखा था जहां से हमने आज की ये डिस्कशन करी है। तो 40-50% चांसेस रहते हैं कि जो आपको बोर्ड में एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलेंगे वो यहीं से मिल जाते हैं। तो रेस्ट जो बची हुई जो है ऑप्शन परसेंटेज है, वो हम कवर करेंगे एमसीक्यूज के लिए दूसरे सोर्स से, जहां से हमारे हमारे जो राइट आंसर की जो लाइक 18 जो हमारे पास 18 to 20 क्वेश्चन होंगे, उनको मैक्सिमम सही आंसर हम ढूंढ सकें। तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, विच सोर्स विच बुक इज रेलेवेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एमसीक्यूज एक्सेप्ट this NCERT exemplar. So see you next Sunday, and till then